Good morning, class 6. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nawada. This is the second video lecture of the chapter Motion and Measurement. In last video, we have discussed what is motion, what is rest. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to the time and its surrounding, then the body is said to be in motion, and a body is said to be at rest when it do not change its position with respect to time and its surrounding. Okay, that is motion. After that, we have seen mode of transport. Different mode of transport is there: land transport, water transport, or the air transport. After that, we have seen course of development of transport. In ancient time, people were not having any vehicles and all those things. They used to walk with their foot or with the help of animals. Later, they developed different. They used boat. Then there was development, means invention of wheels. So they used bullock cart, tangas. Later, the steam engine was introduced or invented. After that, the development of aeroplanes later in 20th century, spacecraft, supersonic, all these things came into picture. In today's video, we are going to see about measurement. Measurement means napna. What do you mean by measurement? For example, first, why do we measure? Why would we need measurement? Okay, we decide the mode of transport between 2 points on the basis of distance. For example, distance between your school and your house, means your home, is 500 meters, means half kilometer. You can easily walk. If distance between your school and your home is 2 kilometer, you can use bicycle. You cannot walk, you will use bicycle. If distance between your house and your school is around 5 to 10 kilometers, then you are not going to use bicycle, you will use school bus or other vehicle. Means the distance between 2 points will decide the mode of transport. If you have to go to the market, you will use your motorcycle or your bike. If you have to go to Patna, you will use your four-wheeler. If you have to go to Delhi, you will use a train, railway reservation. And if you have to go to other country, you will use aeroplanes. So that as the distance increases or decreases, the mode of transport also change. So how do we know the distance between 2 points? So to know the distance between 2 points, you have to measure. Okay, आपको नापना पड़ेगा. Okay, that's what we are going to see in this chapter. Next, you went outside. आप बाहर गए, घर से मम्मी बोली कि 1 किलो आलू लेके आइए. तो आप जाइएगा तो जो क्या कहते हैं, जो सब्जी बेच रहा होगा उसके पास 2 बटखारा है, मतलब सॉरी 2 पैन है. दैट वेइंग इक्विपमेंट, वेइंग बैलेंस है. On that weighing balance he will put 1 kg बटखारा या वेट, नॉन वेट. सो ये जो 1 kg का बटखारा रखा गया है उसका वेट आपको मालूम है, उस पर लिखा हुआ है 1 kg. गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट लिखती है उस पे 1 kg, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इतना वजन को 1 kg बोलेंगे. सो 1 kg उस बटखारा पे लिखा हुआ है, इसका मतलब उस टोटल बटखारा का वजन 1 किलो है. तो क्या करेगा, एक तरफ 1 kg का बटखारा रख देगा और एक तरफ आलू चढ़ाता जाएगा. 1 आलू, 2 आलू, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 12. मतलब एक समय आएगा जब ये दोनों बटखारा बराबर हो जाएगा.
जब दोनों बराबर हो गया, मतलब हम आलू के वजन और बटखारा के वजन का तुलना किए, कंपेयर किए। जब दोनों को कंपेयर किए तो आपको पता चला कि अब आलू का वेट 1 केजी का है। तो इसका मतलब आलू का वेट आपको नहीं मालूम था, मगर बटखारा का आपको मालूम था। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव कंपेयर्ड ए नोन वेट। नोन मतलब जिसको आप जानते हैं, तो 1 केजी का बटखारा, नोन वेट विथ ए अननोन वेट। आलू का वेट कितना है, एक छोटा आलू का कितना वजन है, 10 ग्राम, 50 ग्राम या 150 ग्राम, क्या है आपको नहीं मालूम है। तो आप क्या किए, उसको तुलना किए। सो यू हैव कंपेयर्ड ए नोन वेट दैट इज 1 kg and you have compared an unknown weight that is the potato. So you don't know the weight. So this comparing of a known weight with unknown weight is called measurement. अभी मान लीजिए कि आप 1 किलो आलू तोड़ लिए, अब उस 1 किलो आलू को आप बटखरा की जगह पर रख दीजिए, तो वो भी बटखरा का काम करेगा, क्योंकि अब हमको मालूम है कि इस प्लास्टिक में जितना आलू है उसका वजन 1 केजी का है। तो उस 1 किलो आलू के मदद से हम 1 किलो भिंडी भी तोल सकते हैं। सो दैट इज मेजरमेंट। तो जब आपको आलू का वजन नहीं मालूम था, आप 1 केजी के साथ कंपेयर किए, जब कंपेयर किए तो आपको पता चला कि इस आलू का वजन 1 केजी है। अब आपको पता है, you know the known weight, so now you will place that 1 kg of potato on the left side of the pan and you will put the lady's finger on the other pan. When the pan will become parallel, means when they come to same level, then we can say now the weight of lady finger is also 1 kg. So you didn't knew the weight of potato earlier, so you compared it with that 1 kg butkhara, but later you compared with the potato with the lady's finger. So you got the point. So what is measurement? Measurement means comparing an unknown weight with the known weight is called measurement. अच्छा, मेजरमेंट के लिए दो चीज का होना जरूरी है, एक यूनिट और दूसरा नंबर। जैसे हम बोल रहे हैं 1 केजी, 1 केजी मतलब 1 नंबर, केजी मीन्स यूनिट। अगर हम बोल रहे हैं आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 150 इज द नंबर, सेंटीमीटर इज द यूनिट। As we proceed in the chapter, you will understand little bit more. So this centimeter which I am saying is the unit. If I am saying kilometer, it is also a type of unit. If I am saying kg, then also it is a unit. If I am saying 1 liter, that is also a unit. So this is unit, and the number which is present before that unit is the number. So number and the unit, both things should be there to measure a substance. Okay, so this is measurement. In ancient time, olden समय में, पुराने समय में, people used to measure with their body parts. For example, if someone is measuring with this, so this is called hand span. Distance between the tip of the thumb and the tip of the little finger is called this is called hand span. इसको कहते हैं hand span. Distance between the tip of the thumb and the tip of the little finger, when it is stretched, it is called 1 hand span. Distance between your elbow and the tip of the middle finger is called cubit. Distance between the tip of the middle finger and the shoulder is called 1 arm, means okay, 1 arm length. And when we are talking about foot की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे हील और ग्रेट टो के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं दैट इज 1 फुट स्टेप. ओके, सो इन ओल्डन टाइम पीपल यूज दिस बॉडी पार्ट्स टू मेजर. किसी चीज को मेजर करने के लिए वो इसको यूज करते थे. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. अभी क्या है, मान लीजिए हम आपको बोले कि 1
2 3 4 5 और 5.5। हम बोले कि ऐसा करते हैं 5 5.5 बित्ता का मतलब क्या कहते हैं उसको, हैंड स्पैन का एक ब्लैक बोर्ड बनाते हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर बना लेंगे। जब आप मेजर कीजिएगा तो क्योंकि आपका हाथ छोटा है तो जो ब्लैक बोर्ड होगा वो छोटा होगा। अगर कोई इंसान जिसका हाइट 7.6 है मतलब वो हमसे बहुत लंबा है तो उसका हाथ भी चौड़ा चौड़ा होगा। जब वही अपने हाथ से नापेगा तो उसके लिए ब्लैक बोर्ड और बड़ा होगा। मींस बॉडी पार्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई it is not accurate. The measurement with the body part is not accurate. There is no precision. Okay, so as I will write you will understand what is measurement. Comparing an unknown quantity with some known quantity. Known quantity is called measurement. Is called measurement. To measure, नापना something, we should know. अगर किसी चीज को नापना है तो हमको दो चीज चाहिए। क्या क्या मतलब किसी का अगर मेजर बताना है कि वो उसका लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है तो उसको बताने के लिए हमको दो चीज चाहिए। एक चाहिए the unit of measurement। किस यूनिट में हम 1 किलोमीटर में मेजर करना चाहते हैं, मीटर में मेजर करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हैं। और दूसरा the number of units that substance मेजर, मतलब इस यूनिट का कितना नंबर कितना बार। अगर बोलते हैं कि यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, अगर मान लेते हैं हम इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर तो ये कितना बार इसको हम इस पे रख सकते हैं, कितना हम 1 सेंटीमीटर के कितना ढक्कन को इस बोर्ड पे रख सकते हैं। तो अगर बोलते हैं कि यहाँ से वहां तक 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हम बोलेंगे 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 24 सेंटीमीटर। बाय because the length of this cap was 1 centimeter, so I can place 24 caps on this board, so it is 24 times the unit। एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का 24 टाइम्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट सब्सटेंस मेजर, वो सब्सटेंस नापा गया तो इस यूनिट का कितना टाइम्स, कितना नंबर, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, example, if I am saying 150 centimeter, your height is 150 centimeter, then 150 is the number and this centimeter is the unit। You will see once again, फिर से हम लोग इसको आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। In ancient time how people used to measure। In ancient time people used to measure by पहला hand span, it is
the distance or the length, it is the length between the tip of the thumb and the tip of little finger when stretched is called hand span. Okay, so this is hand span. Second, cubit, cubit, the length between the tip of the middle finger and the elbow is called cubit. Third, arm length, the length between the tip of middle finger and the shoulder, the length between the tip of middle finger and the shoulder is called arm length. And the fourth one is foot step, the length between the great toe and the heel is called foot step. The length between the great toe and the heel is called foot step. So in ancient time people used to measure with the help of handstand, cubit, arm length and foot step. But there was a problem, एक दिक्कत था. क्या? अभी बता चुके हैं आपको. The body part differ from person to person. The body part differ from person to person. So this measurement lack प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी. इस तरह का जो मेजरमेंट होता था पहले समय में, जो मेजरमेंट करते थे, इस मेजरमेंट के लिए हैंडस्टैंड, क्यूबिट, आर्म लेंथ और फुट स्टेप जो यूज होता था, ये जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता था. मतलब ये पर्सन टू पर्सन बदलता रहता था. इसलिए सो दिस मेजरमेंट लैक एक्यूरेसी और प्रिसीजन. मतलब हम अगर आपको फोन करके बोल दिए हैं कि आप एक काम कीजिए,
आप एक गुलाब का फूल ड्रॉ कीजिए और वो गुलाब का फूल जो है वो एक बित्ता बड़ा होना चाहिए। तो क्या जितने बच्चे भी आप लोग बनाएंगे गुलाब का फूल, क्या सबका गुलाब का फूल एक साइज का होगा? नहीं, किसी का हैंड स्पैन छोटा है, किसी का बड़ा है। तो इसका मतलब सब बच्चों का जो गुलाब का फूल होगा वो डिफर करता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, in ancient time people used this unit of means this type of measurement। अब देखिए, अगर मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 and half, तो हम कह रहे हैं the length of this board, sorry, width of this board is 5.5 hands span। तो क्या हो गया, दिस इज द नंबर एंड दिस इज द यूनिट। ओके, अच्छा एक और बात है, आप देखिएगा आपके बुक में एक एक्टिविटी क्या है, एक ऐसे ही बोला गया है। उसमें क्या है कि मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक टेबल है, दो बच्चे एक साथ इस टेबल पे रहते हैं, तो दोनों में हमेशा झगड़ा हो जाता है। क्लास का टेबल है, मीन्स डेस्क है आपका, और दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो बोल रहा है, ये बोल रहा है ए और बी, ए बोल रहा है कि बी ज्यादा जगह लेता है, बी बोल रहा है कि ए ज्यादा जगह लेता है। तो क्या हुआ, सर बोले कि ऐसा एक काम करो, इस बेंच इस पूरे डेस्क को मेजर कर लो और इसको आधा आधा बांट लो। ठीक है, तो क्या किए कि एक तो वो जो बच्चा है आप लोग में से कोई एक है, जैसे मान लीजिए कोई गिल्ली डंडा खेलने में पसंद है, तो उसके पास गिल्ली डंडा रखा हुआ था, आपके बुक के अनुसार हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक डंडा और एक गिल्ली, फिर उसके बाद एक गिल्ली और एक डंडा। तो क्या हुआ, जब मेजर किए तो आपको पता चला कि इस टेबल का जो लंबाई है वो है 2 डंडा, 2 लेंथ्स ऑफ द डंडा एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव क्या किए, सो यू मेजर्ड one डंडा फ्रॉम दिस साइड, one डंडा फ्रॉम दिस साइड, एंड one गिल्ली फ्रॉम दिस साइड एंड one गिल्ली फ्रॉम दिस साइड, एंड यू placed a line, a marking। Now this is the boundary, this area is for B, this area is for A। After some time, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ये लाइन धीरे धीरे मिट गया तो झगड़ा फिर चालू हो गया। इस बार क्या किया कि फिर से आप लोग मेजर करने के लिए आ गए गिल्ली डंडा से, मतलब ये दोनों मेजर करना शुरू कर दिए गिल्ली डंडा से। अब की बार क्या था कि डंडा जो था थोड़ा बड़ा था, तो क्या हुआ, तो लेंथ ऑफ द टेबल वाज 2 डंडा एंड 1 गिल्ली। अब कैसे इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका कोई और तरीका क्या हो सकता है, तो एक तरीका ये हो सकता है, तो चूंकि पहली बार गिल्ली डंडा छोटा था तो इसलिए हमेशा गिल्ली डंडा का लेंथ सेम तो नहीं रहेगा, तो इसीलिए चूंकि वो लेंथ बढ़ घट सकता है इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं मान सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है, एक और तरीके से इसको किया जा सकता है। क्या कर लेंगे, एक धागा लेंगे, उसको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे। मान लीजिए ये धागा है, उसके बाद इसके टिप को और इस यहाँ पे इस धागा में मार्क लगा देंगे। मान लीजिए धागा इतना बड़ा, यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे और यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। अब इस मार्क को और इस मार्क को दोनों को एक साथ ले आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये धागा है, ठीक है, तो ये इसका टिप है, ये इसका टिप है, इन दोनों को ऐसे मिला लेते हैं। मिला लेंगे तो ये जो लेंथ होगा वो इसका हाफ होगा। अगर हम इसको और एक बार मोड़ लेते हैं तो ये जो लेंथ होगा वो 1/4 होगा, और इसको हम एक बार और मोड़ लेते हैं तो ये जो लेंथ होगा 1/8 होगा। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से यहाँ तक था तो एक लेंथ, एक लंबाई था, हम क्या किए इसको बीच से मोड़ लिए तो 1.5 हो गया, तो यहाँ बीच में बाउंड्री दे देंगे, फिर से लाइन आ जाएगा। अगर हम इस टेबल को 4 भाग में डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको 2 बार मोड़ देंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक, फिर से एक बार इसको मोड़ के बीच में कर देंगे। तो ये क्या हो गया,
1/4 हो गया, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। अब मान लेते हैं कि इसको हम फिर से एक बार मोड़ देते हैं। अगर यहाँ से इसको मोड़ देंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। So that's what how this way also measuring can be done. If you read your book, you will understand this. Okay.